हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू विल फाइन। यहाँ पर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, पार्ट थर्ड, पॉलीगॉन एंड क्वाड्रिलेटर से। इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आने वाले हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी हो सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1। ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम and we have to find angle XYZ, whereas angle B is 110 degree given and angle DAC is 40 degree given. तो हम देखते हैं कि एंगल X इज इक्वल टू 110 डिग्री, X इज इक्वल टू 110 डिग्री. Since we know that opposite angles of parallelogram are equal, are equal, and angle DAB plus angle DAB plus angle ABC is equal to 180 degree. Since adjacent angle of parallelogram are supplementary, adjacent angle of parallelogram are supplementary, or we can say they forms linear pair, and angle DAB can be written as angle DAC plus angle CAB plus angle CAB and plus 110. The value of this angle is 110 degree is equal to 180 degree, and DAC is 40 degree plus CAB is Z plus 110 is equal to 180 degree. This way we can calculate Z is equal to 180 minus 150, i.e. 30 degree. So angle Z is 30 degree. Now angle Y is equal to angle Z. Since they are interior alternate angles, this AD is parallel to CB and AC is the transversal. So this way, AB is parallel to DC and AC is transversal. So angle Y and angle Z are interior alternate angles. This way interior alternate angles are equal. Since this is AB is parallel to DC, so interior alternate angles are equal. ये Z की तरह से बन रहा है इस तरह से. This way Y is equal to 30 degree. Now we have, this way we have got all the angles. Angle X 110 degree, angle Z 30 degree, and angle Y is equal to also 30 degree. Our next question is part second. सेकेंड क्वेश्चन में भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है. MNOP is the parallelogram. Side ON is produced so that angle Z is formed. अब हमें देखना है सबसे पहले कि हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. So first Z, angle Z is equal to 70 degree. Angle Z is equal to 70 degree. Since Z and 70 degree are corresponding angles. MN is parallel to PO and this line ON is as a transversal. Corresponding angles are equal.
since MN parallel to PQ and ON is transversal. So this way Z is 70 degree. Now similarly, Y is also 70 degree. Y is equal to 70 degree, opposite angle of parallelogram. Opposite angle of parallelogram. Opposite angle of parallelogram are equal. Now angle x plus 70 degree forms linear pair. Angle M and N are adjacent angle of parallelogram. Angle M plus N, this way angle M plus N is equal to 180 degree because of they are adjacent angle of parallelogram, and adjacent angle of parallelogram forms linear pair, or they are supplement. Linear pair. So they forms linear pair. This way, or substituting the values angle x instead of M and instead of N 70 degree. M x plus 70 is equal to 180 degree, or x is equal to 180 minus 70, 110 degree. So this way we have got all the angles x, y, z. X is 110 degree, y is 70 degree, and z is also 70 degree. Taking next question, question number 2. अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर इन द रेशियो 2:3. फाइंड द मेजर ऑफ all the angles. We have to find the measure of all the angles. Say adjacent angle are A and B. So A is 2x. Let angle A is equal to, their common multiple is x. So angle A is equal to 2x and angle B is equal to 3x. And we have, हमारे पास एक बहुत important चीज़ है कि adjacent angle of parallelogram are supplement or they form linear pair. So therefore adjacent angle of parallelogram forms linear pair. Or supplement. Adjacent angle of parallelogram are supplement. You can also say they are supplement. Supplement. Therefore angle A plus angle B is equal to 180 degree. Angle A plus angle B is equal to 180 degree, or instead of angle A we can put 2x, instead of angle B we can put 3x. 3x is equal to 180 degree, and this way 5x is equal to 180 degree, or x is equal to 180 upon 5, 36 degree. This way x is 36 degree. Now we can find all the angles of this parallelogram.
the value of x is 36 degree, therefore angle A is equal to 2 into 36, 2x, that is equal to 2 into 36 is equal to 72 degree. This way angle A is 72 degree and angle B is equal to 3 into 36. 3x is equal to 3 into 36. That is equal to 108 degree. 108 degree. So this way, but the diagram is थोड़ा उल्टा हो गया डायग्राम. नो प्रॉब्लम, इधर B कर देते, इधर A कर देते. सो दिस वे हमारे सारे एंगल पैरेललोग्राम के निकल आते हैं. नाउ ए के अपोजिट है सी, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. सो दिस वे सी इज इक्वल टू अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. of parallelogram are equal. So therefore angle C is 72 degree. Angle C भी 72 degree आ जाता है. तो एंगल अब हम देखते हैं एंगल B के अपोजिट है एंगल D. So angle C, therefore angle C is equal to 72 degree. 108 है, वो उल्टा हो गया, 72 डिग्री. नाउ एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. एंगल D इज इक्वल टू एंगल B. एंगल D इज इक्वल टू एंगल B. Opposite angle. This is also opposite angle and angle B was 108, so that will be 108 degree. This way we have got all the angles. Therefore all the angles of parallelogram are 72 degree, 108 degree, 72 degree and 108 degree. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. दोस्तों अब हमारे सामने पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है. पी क्यू आर एस और एंगल पी एस आर दिया हुआ है 110 डिग्री. सो वी हैव टू फाइंड अदर एंगल्स. ये पैरेललोग्राम के लिए साइन भी लगा देते हैं. ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है. वी हैव एंगल W plus 110 degree is equal to 180 degree forms linear pair. 110 degree plus W is equal to 180 degree forms linear pair. Or angle on the same line segment, two angle on the same line segment, sum of two angle on the same line segment, it is 180 degree, or they forms linear pair, or they are supplement. So this way therefore W is equal to 180 minus 110 degree, which is equal to 70 degree. W is 70 degree. Now angle Z is equal to 180 degree. Angle Z is opposite to angle S. Opposite angle of parallelogram are equal. Angle Z is equal to 110 degree. Opposite angle of parallelogram. Now angle X plus angle 110 degree is equal to 180, or directly we can say angle X and W are
interior alternate angles. If we proceed extend this QP को extend कर दें तो X और W interior alternate angle बन जाते हैं, क्योंकि PQ is parallel to SR and PS is transversal. तो X और W कैसे बनते हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनते हैं, अल्टरनेट एंगल. और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इन दोनों को प्लस करके इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल x डिग्री प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट. इसी तरह से एंगल y और w करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म करते हैं. दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल. और एंगल x और y भी इक्वल हैं, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. दिस वे y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 70 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. opposite angles of parallelogram. This way we have got all the values x, y, z and w. Our next question is fourth question. तो हमारे सामने अब क्वेश्चन नंबर 4 है. द शॉर्टर साइड of a parallelogram is 3.6 centimeter and the longer side is half as much as again the shorter side. Find its perimeter. So the shorter side is given, which is 3.6 centimeter. Shorter side is 3.6 centimeter. So longer side is half as much as again the shorter side. So longer side is equal to half of this into 3.6 plus 3.6 centimeter. So as the condition, longer side is half as much as again the shorter side, so that is equal to 1.8 plus 3.6, which is equal to 5.4 centimeter. Now perimeter of parallelogram is equal to 2 into longer side plus shorter side. 2 into longer side plus shorter side. That means 2 into longer side is 5.4 and shorter side is 3.6, which is equal to 2 into the sum of 5.4 plus 3.6 is 9. So it is 9 to the 18 centimeter. This way the perimeter of the parallelogram is 18 centimeter. तो अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है. द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 3:5 and its perimeter is 80 centimeter. Find the sides of the parallelogram. As I told you, the perimeter of parallelogram is equal to perimeter of parallelogram
is equal to 2 into sum of adjacent sides. 2 into sum of adjacent sides means that longer side and shorter side. So let again, as their common multiple is x, so the shorter side will be 3x. So that is equal to, perimeter is 80, here 80. 80 is equal to 2 into 3x plus 5x. Longer side will be 5x. Let their common multiple be x. 3x plus 5x into 2 is equal to 80. Or 80 is equal to 2 into 5 plus 3, 8. 8x. Therefore, x is equal to 8 to the 16. 80 upon 16. And that is equal to 5. So therefore the shorter side of the parallelogram will be shorter side of the parallelogram. Is equal to 3 into 5 is equal to 15 centimeter, and the longer side of parallelogram is equal to 5 into x, means that 5 into 5 is equal to 25 centimeter. Thus the sides, adjacent sides of the parallelogram are 15 centimeter and 25 centimeter. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें तथा कमेंट बॉक्स में लिखें आप किस शहर और किस कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बुक का नेम प्लस क्वेश्चन नंबर। सो दिस वे थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्कॉलर्स। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।